Alright, so big announcement coming in from Reliance Jio. Another big headline maker. They're finally a feature phone that was being talked about for months has hit the market, and Mukesh Ambani announcing that it will be available. It is here, and the price, boy, you would want to know what it's been priced at. But Aditya, again, a historical day for Reliance Jio and also Jio customers who will be receiving a feature phone finally from Reliance Jio. But the plans, the tariffs, the pricing has been such that it's absolutely taken everyone by storm. अरे ये सब ठीक है साइरस, बट सबसे पहले what we like to tell you is that this phone costs ₹0. Yes, वो फ्री कह रहे हैं, जीरो बोलिए, फ्री बोलिए, बट जो बात है वो सच है. You don't have to pay anything except for a very small amount of 1500, which apparently is refundable as well. So we'll take you through that, the new plans, what all other key announcements have been made, and some big offers for consumers as well. So Cyrus, how excited were you when this was his first Jio launch cover that he's done, and it was pretty exciting and pressurized as well. Yeah, so when they had launched the data plan, जब data plan पहले launch किए थे उन्होंने काफी excitement हुई थी, and जैसी announcement हुई थी कि free data आपको available होगा, तो obviously जो भीड़ लग गई थी Reliance Jio के stores के सामने SIM के लिए, वो एक्साइटमेंट अभी फिलहाल नहीं है, बिकॉज द फीचर फोन इज नॉट अवेलेबल फॉर सेल. अभी आपको मिलेगा नहीं. 24 अगस्त से इसके प्री बुकिंग्स आपको अवेलेबल होंगे, आप स्टार्ट कर सकते हैं. लेकिन जो आदित्य ने बात बोली है ₹0, जी हाँ, अनाउंसमेंट में यही बात बोली गई थी कि ₹0 में आपको ये फोन मिलेगा. प्रैक्टिकली देखा जाए तो ऐसा रिलेटिवली हो नहीं सकता, बिकॉज इट्स अ हार्डवेयर. आपको कहीं ना कहीं उसकी कीमत देनी पड़ेगी, और वो कीमत ₹1500 है. तो बेसिकली देखा जाए ₹1500 आपको डिपॉजिट करने पड़ेंगे, वो फोन आपको मिलेगा. 3 साल के लिए आप उस फोन को यूज कर सकते हैं, और 3 साल बाद आप उस फोन को रिटर्न करें, और वो मनी जो ₹1500 आपने दिए वो आप रिफंड कर सकते हैं. तो इन अ वे कह रहे हैं कि आप अपने पैसे बैंक में रख लीजिए, उसका इन्वेस्टमेंट आपको मिल रहा है, आप डेटा यूज कर रहे हैं, and you basically are getting your 1500 back. But it's not that it's free. You're paying for the data. इन्होंने बोला है कि वॉइस कॉल्स आपको फ्री में मिलेंगे. दैट्स ट्रू कि वॉइसिंग आपको फ्री, वॉइस कॉल जो आप कर रहे हैं फ्री है, लेकिन डेटा के लिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, विच इज अ वेरी मार्जिनल अमाउंट. एंड मुकेश अंबानी सेड कि आप मार्केट में कंपटीशन भी देख लें तो इट्स ऑलमोस्ट 3% of what the other competitors are charging. So 153 is the amount, monthly amount that you will have to pay for data charges, and आपको उसके लिए unlimited data मिल सकता है. And there are also sachet charges. तो आपको daily अगर data use करना है तो उसके लिए ₹24 और ₹53 अगर आपको weekly use करना है. So I think Aditya, they've really planned it out. जैसे उन्होंने जो data plans अपने जो Jio SIM use जो launch किया था, कहीं ना कहीं इसके लिए भी बहुत hard planning की है Reliance ने. All I can say is 21 July is clearly a bombastic day for people, because last year 24 July 21st July is the day the AGM happens, and मेरे को अच्छे से याद है लास्ट ईयर 21st जुलाई के दिन ही जब AGM हुआ था, जियो ने काफी सारे एक्स्ट्रा एक्साइटिंग अनाउंसमेंट्स किए थे, और दिस डे इज नो डिफरेंट एज वेल. सो यस, 1500 सिक्योरिटी रिफंडेबल डिपॉजिट है. 3 साल के बाद आपको रिफंड किया जाएगा, बट 3 साल के बारे में हम अभी बात नहीं कर सकते हैं. द फोन विल बी अवेलेबल फॉर प्री बुकिंग फ्रॉम 24 अगस्त. सो वी डोंट नो when it will be actually available at stores to buy, and we actually also don't know how you can pre-book this device right now. In all probability you might have to go to a Jio store or maybe jio.com पे जाके आपको register करना पड़ेगा, या फिर कोई एक minimum amount देना पड़ेगा. So those details are yet to be furnished yet, and but stay tuned with us, we'll definitely give you more updates on that. But yes, talking about the data plans, 153 is also part of that Jio Dhandanadan scheme, and the Dhandanadan keeps on rolling about, and इसमें आपको मिलता है unlimited data. Company hasn't said how much you can use in that, but I am hopeful that it again should be a 1 GB per day वाला स्कीम, जिसके बाद आपको शायद 128 kbps के हिसाब से स्पीड्स मिलेंगे. So those are some things which need to be furnished yet, Cyrus, and I'm hoping that in the next couple of hours we'll get more details on that. But yes, nevertheless it's an exciting announcement. The Jio phone is out, feature phone with 4G VoLTE, जिसपे आपको डेटा, आप वॉइस कॉल्स आपको फ्री कर सकते हैं, आप जियो के एप्स यूज कर सकते हैं, and you can do host of other things as well. But first, फीचर फोन पे इंटरनेट बैटरी लाइफ, साइरस, इज दैट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम? हो सकता है. अभी बैटरी लाइफ की स्पेसिफिकेशंस के बारे में कंपनी ने ज्यादा बोला नहीं है, लेकिन फीचर सेट जो ऑफर कर रहे हैं दैट इज रियली कोलोसल. आप कंसिडर करें फीचर फोन
मार्केट में ज्यादा आपको फीचर्स अवेलेबल नहीं करते। हाँ, चाइनीज मार्केट में आपको ऐसे गिमिकी फोन जरूर मिलते हैं जिसपे आप टीवी देख सकते हैं या फिर उससे इंटरनेट यूज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे गिमिकी स्मार्टफोन फीचर फोन्स मार्केट में होते हैं, लेकिन रिलायंस हैव सेड द एश्योरिटी दैट दे आर गिविंग विद देयर फीचर्स दैट इज एक्चुअली जो एक कॉमनर को यूज में आएगा। जैसे वॉइस कमांड्स, आप वॉइस टाइपिंग कर सकते हैं, आप फोन से बात कर कर किसी को कॉल करना चाहें वो फीचर आपको अवेलेबल होगा। यू कैन ऑल्सो वॉइस टाइप अ टेक्स्ट मैसेज, सो यू कैन it was shown as a demo, so they're clearly defining it as a feature phone, which is really a bit of a separate entity from other feature phones that are right now in the market. They're seriously putting it forth as the next big thing. एक और जो feature मुझे बड़ा interesting लगा आदित्य, they've also announced a cable TV feature, which basically means that you can use the data on your phone and connect it to even a smart TV, या फिर पुराने जो TVs आते थे, आपके cable TVs जो आते थे, उसमें भी आप इस फोन को इस्तेमाल कर content view कर सकते हैं। तो this is really a big feature when Reliance Jio put forward their feature phone. Not only are Airtel and Vodafone in danger, but also the Tata Sky and the Airtel TVs are also in kind of a spot of bother as well. Yeah. But yes, apart from that, people have been asking about the prices and all. So the price of the phone, there is no price. It's zero. It's free. It's free. It is free. I mean, I can't just repeat every time, but it is free. But आपको security deposit देना पड़ेगा 1500 का, which is refundable after using for 3 years that the company claims. The pre-booking starts from 24th of August, which is just a month away from now, and hopefully this will be available at Jio stores and Jio website as well. But for now, the plans that have been announced, you have got a 153 rupee ka data plan which you have to pay every month, and this is a way that Jio is saying, boss, बहुत हुआ free, अब हमें भी थोड़ा पैसा कमाने दो, because the company has to run, it has to show its shareholders that it needs to make money, it needs to show money, and I think it's a good way, because if you actually notice the presentation, Cyrus, he talked about 50 crore feature phone users are being deprived of not being on the digital platform, and one of the reasons for that is because these phones cost so less that they are able to afford it, and they don't really care about using internet, because आधे जगहों पे internet मिलता ही नहीं है, so that's the other problem. And Jio being a 4G VoLTE, and Mr. Ambani claiming that now their 4G penetration is going to be much more than what a 2G penetration is, that's quite interesting, and it'll be interesting to see if that really pans out, because मैं काफी जगह गया हूँ throughout the country, and there have been places where Jio is hardly usable, because ये सिर्फ 4G पे चलता है, अगर आप 3G या 4G नेटवर्क पे जाएंगे आपको ये नहीं चलेगा, so it'll be interesting to see how that works out. But Jio claims that they're going to expand their network, they're going to expand their availability at stores as well, काफी सारे online channels के साथ ये लोग partner करने वाले हैं, so I think that the availability of the phone is going to be big, which is why they're waiting for a month to see what kind of demand they get, and then probably stock themselves across different platforms. Yeah, true. It could be another Jio जो SIM जब लॉन्च हुआ था, लोगों में काफी एक्साइटमेंट थी, लोग इस फोन को, इस SIM को अवेल करना चाहते थे, उसकी सर्विसेज अवेल करना चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह जियो की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, स्पीड इंटरनेट का काफी कम होता गया, और लोगों ने काफी कंप्लेंट्स भी किए हैं। होपफुली फीचर फोन के साथ, बिकॉज दे हैव अ पीस ऑफ हार्डवेयर दैट दे आर ऑफरिंग, और ऐसा कोई फिल्मजी हार्डवेयर नहीं है। आपको याद होगा आदित्य, हमने काफी स्टोरीज की थी क्विंट की वेबसाइट पे कि रिलायंस जियो का फीचर फोन आने वाला है, there's going to be a feature phone, there's going to have this feature and all that. जो एक्चुअल फीचर फोन जो इमेजेस हमें दिखाई गई वो काफी डिफरेंट हैं जो हमें ऑनलाइन लीक्स मिली थी, एंड कहीं ना कहीं इट लुक्स लाइक अ प्रॉपर टिपिकल फीचर फोन फॉर द इंडियन मार्केट, जिसमें आपको FM प्लेयर, बेसिक इंटरनेट एक्सप्लोरिंग आपको मिल रही है, और उसके ऊपर आप वॉइस कमांड्स आप दे सकते हैं, बैटरी लाइफ एंड ऑल दैट स्पेसिफिकेशन डीपली हम जब तक हमारे पास फर्स्ट हैंड के लिए फोन फीचर अवेलेबल नहीं होगा तब तक हम नहीं कह सकते, लेकिन जो फीचर सेट दे रहे हैं दैट्स अमेजिंग। एंड द वन अनदर बिग फीचर दैट Reliance Jio have added in this phone is NFC payment. आप बिलीव कर सकते हैं एक फीचर फोन में NFC, जो आप टैप एंड पे, जो सैमसंग पे आपको एक ऑफर देता है, बेसिकली आप फोन को टैप करें किसी क्रेडिट कार्ड मशीन पे और पेमेंट कर सकते हैं, आपको एक फीचर फोन पे जो बेसिकली इसकी कीमत ₹0 है, आदित्य ने बताया, उसमें यू विल बी एबल टू टैप एंड मेक पेमेंट्स, जो एक सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद आएगा। इनिशियली इट विल नॉट बी अवेलेबल, द कंपनी हैज सेड, बट आफ्टर अ सॉफ्टवेयर अपडेट यू विल बी एबल टू टैप एंड मेक पेमेंट। दिस इज रियली stuff out of a futuristic movie. A feature phone से आप just tap करके payment कर रहे हैं, so really Reliance is really pushing the boundaries here, and which clearly tells they're trying to disrupt the market. Feature phones, जी हाँ, market में आप देखें अगर feature phones के जो market share है वो ज़्यादातर Micromax या itel का African company है, उन्होंने capture कर रखा है, but with this phone Aditya, I'm sure those numbers are going to fluctuate very soon.
Yeah, the whole market is in for a disruption yet again and फीचर फोन के हिसाब से एंड काफी लोग पूछ रहे हैं कि डेटा चार्ज कहाँ से कौन से अनाउंस हुए हैं 153 का अनाउंस हुआ है उसके अलावा देव गॉट अ 54 rupees sachet for like a couple of days validity and all and they have multiple others as well but there's no point talking about plans right now because the phone isn't available yet and pre-bookings will start from 24th of August so there's a long time we'll try to get our hands on the device much before that honestly but let's see how lucky we are because free फोन है पूरी दुनिया चाहेगी इस फोन पे अपना हाथ मारने को so we don't really know how lucky we are going to be but apart from that yes the excitement is definitely there 50 crore phone users are going to get attached to it but my question coming to digital payment is ये जो काफी सारे लोग हैं they live on cash I mean as we saw during demonetization that people got severely hit by demonetization because there was no cash so do you think digital payment is something that they really want on their phones right now because most of the people they don't even have bank accounts right and also understanding that technology of making digital payments is something that when you go to the urban areas where the downtrodden areas वहाँ पर digital payments जो technology है उसको समझना काफी मुश्किल है अभी लोगों के लिए क्योंकि हम बरसों से यही एक ट्रांजैक्शन करते हैं अपनी जेब से पैसा निकाला पैसा दिया और प्रोडक्ट खरीदे लेकिन फॉर समबडी who's wanting to buy fertilizers for typical rural India उनके लिए ये डिजिटल जो NFC पेमेंट्स एक तरह फीचर काम कर रहा है आई डोंट नो progressively in time they might understand कि हाँ ऐसे भी payments हो सकते हैं because आधार की वजह से आदित्य digital payments have become much more easier and our prime minister has that initiative कि पूरा India digital हो and very soon. Prime Minister, you can actually listen to his podcast, Man Ki Baat podcast on his phone as well. So I think that there's a lot of goodwill that has been shown by Ambani and co with this device and I think I also came across the Namo app being there on the phone. This is exclusive.